right. So we're starting the new topic today, which is called connected particles. Let's discuss a bit of theory before jumping into the past paper questions. All right, so connected particles look like this. Here's a pulley type structure, here's a string passing through it, and then there are two particles connected to both ends of the string. This is a connected particle system, or it could look like this. Here's a horizontal surface, here's the pulley, and here's the thread, and here are the two connected particles. Or we could be talking about a system like this where there's a slope, pulley, thread, and connected particles. So these are a few examples of connected particle systems. Let's take a look at the first system. Okay, so since this is one string passing through the pulley, the tension in the string is going to stay the same. Tension in string is the same throughout. And it points away from the particle. That means I can say there's a tension in this direction, same tension in this direction, tension here, and same tension here, and a tension here away from the particle and a tension here. Okay. Now in the first system, in the downward direction, we'll have the weight, mg, mg. In the second system, the weight on the first particle is in this direction, and on the second particle, the weight is going to be in this direction, and opposing the weight, there's going to be another force upwards. What is this force? Can anybody recall? No one can recall? Normal contact force. Yes, exactly, normal contact force, which is mostly represented by R. So this is R. Okay. And in case the system is or the horizontal surface is rough and you're told that the object is moving in this direction, so then there's also going to be a frictional force in the backward direction, mu r, if the object is moving towards the left. In case it's moving towards the right, then the friction will be in the opposite direction. For the third system, there's going to be an mg in this direction. But on the inclined plane, we will not use mg directly, but two components of mg. So this one is going to be mg cos theta, and this one is going to be mg sine theta. And theta would be this angle here. This would be theta. Similarly, in case you're told that the system is moving upwards, then, and you're told that there's
friction or the surface of the slope is rough, then there's also going to be friction in the opposite directions of motion, mu r. Also, there's going to be a normal contact force in this direction. We will be using forward force is equals to backward force if the acceleration is 0. If acceleration is 0 or object is at rest or system is in equilibrium, that means it's not moving. System in equilibrium. Otherwise, if there's motion and a value of acceleration, then we'll use the formula F forward minus मैम G. मैम थोड़ा सा रिकैप देख सकती हैं क्योंकि मेरे इंटरनेट काम नहीं कर रहा था इस वजह से मैं नहीं कर आप सका। ऐसा करो, अभी इसकी स्क्रीनशॉट लो ना। अभी ये हर न्यूमेरिकल में दोबारा आएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई एक सिस्टम होगा, वो सब मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी। अभी स्क्रीनशॉट लो और क्लास के बाद ना इसको कॉपी जरूर कर लेना जो मैं अभी लिख रही। ठीक है ठीक है, मैं दोबारा से ये सारे कराऊंगी जब हम अभी स्टार्ट करते हैं वर्कशीट तो। ओके, अच्छा जी। इसके अलावा व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो दैट at a particular instant, the velocities of both the particles would be the same. For example, the system moves, let's say, और एक particle नीचे जाना शुरू हो गया है तो एक ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे समझो आपके पास एक रिमोट है और आप पॉज कर दो, पॉज कर दिया, तो उस इंस्टेंट पे ना दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है। व्हाट आई मीन टू से इज, फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं पहले। राइट दिस डाउन दैट velocity of both particles is the same at any particular instant. So what I mean to say is that here's the system, first system that we discussed already. Okay. So now let's say one of the particle goes down, starts moving down, then obviously the other one will start moving up. So this one will start going down and this one will start going up. So at any particular instant, velocity will be the same. So let's say if this is, since this is going up and this is going down, if this u is 2, then this u at the same time is 2. So velocity at any particular instant of the connected particles is going to be the same. As long as the string is taut. As long as the string is taut. Taut means stretched, completely stretched. It shouldn't be slacking, like the string has to be completely stretched out. It can't have like these bundles in it. Has to be straight, stretched string. So if the string stays straight and stretched, that is taut, then at any one particular instant, velocities of both the particles could to be the same. Okay. Now what happens
when one of the particle hits the ground, what happens when one particle is very important, hits the ground? Let's take a look at it. So originally we had this system. Okay, now what happens? There's ground here, and soon this part, let's say the movement is in this direction. This particle is going to hit the ground. Then what happens to the other particle? Okay, so it hits the ground. For an instant, this is what the system looked like. One of the particle has gone down and the other one goes up. But since there's impact here between the first particle and the ground, there's impact here, right? Impact with ground makes the string slack. That means the string is now not straight anymore. It has now curves in it. So because the first particle hits the ground, the impact makes the string slack and the other particle moves further up. The first particle is going to hit the ground. There's going to be a strong impact, because of which what happens? The string slacks and the object further moves up. This goes up because of the impact. Is that clear what I'm trying to say? As soon as the first object hits the ground, because of the impact, the string becomes slack, and now the particle is going to move further up. Let's say it moves over here because the string has slack. So it pulls it up. Now, when the string is slacked, what is going to be the speed of this particle at maximum height? When the second particle reaches its maximum height, after which it begins to fall down again, what is going to be its velocity? We've seen that in vertical motion as well. When you throw an object upwards, what is its highest point velocity? 0. Yes, 0. So using similar logic, it's the speed v is going to be 0. Till it reaches, so it moves further up till its velocity is equals to 0. So at the highest most point, the speed of or the velocity of the particle is going to be 0. Okay. Now, when the string is slack, when string slacks, acceleration equals to -10 meters per second square upwards, or acceleration is equals to 10 meters per second square if it's going downwards.
So this means that when the string slacks, the system becomes like a free fall system. So in free fall, if there's no resistance, then acceleration is plus 10 if the object is falling downwards, or minus 10 if it's going upwards. Okay. Also, since the string is slack, tension in the string is 0 when the string is slacked only then. And time up is equals to time down. Which means if it takes, for example, 2 seconds for the string, this hits the ground. At that instant, the first string is here. But then, because of the impact, the string slacks and the particle goes further up. So if this time, I'm calling this T up, time up, time for which the particle moves from this position to its highest point. That is, for example, 2 seconds. Then time it takes for the particle to come down to its original position where the string becomes slacked again. This time down is going to be 2 seconds as well. So if it takes 2 seconds for the particle to move from this point to its highest point at which velocity is 0, if that time is 2 seconds, then it takes 2 seconds for the particle to drop and come back to its original point, which was here. I think I've covered everything. Let me just give it a quick look. Okay, yes. Achha. One more thing, there is slacking going on due to impact in all of these systems. So let's take a look at the system 2. It was something like this. So let's say this particle hits the ground. Then the string will slack because of impact and the particle will move further towards the pulley. And in an inclined system, here's the particle. Let's say it's here. As soon as the object hits the ground, but then because of the impact, the string will slack and it will make the particle move further up the slope. And at its highest position, speed is going to be 0. Or sorry, velocity is going to be 0, u or v. And after that, the object comes down. And similarly, t up will be equals to t down. One more thing before we start. First system again. Okay, let's say
the first particle or the system at the particle at the right moves 2 units down or 2 centimeters down. It has gone 2 centimeters down. Then the other particle has gone 2 centimeters up. Since they're connected to the same string. So the distance covered by the particle at a particular instant is also the same, just like velocities. Distance covered by the particles at a particular instant is equal. Okay. I hope that's everything. Let's take a look at the first question. Okay. Particle A and B of mass 0.15 kg and 0.25 kg. If I have the mass, I can draw the downward pointing weights. So the first weight is going to be mg, g is 10, so 1.5 newtons, and the other one is going to be 2.5 newtons. This is the weight. Are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth pulley. The system is held at rest, which means if it's held at rest, that means there's no acceleration, which means forward force equals backward force. With the string taut, that means completely stretched, and with A and B at the same horizontal level, as we can see in the figure, the system is then released. Okay, now it releases. That means now there's some acceleration, and then you'll have to use F forward minus F backwards is equals to MA when the system is released. Okay, write down the acceleration of B. Okay, so to begin with, when the system is at rest, we've seen that there are two downward pointing forces, 1.5 newtons weight and 2.5 newton weight. Okay, at the same time, there is tension pointing upwards here and here. Find the downward acceleration of B. Okay, now the system is moving. So the formula is going to be forward force minus backward force is equals to MA. So if you look at B, B is going downwards. So the forward force is going to be 2.5 newtons. Minus the backward force is going to be T is equals to mass, which is 0.25 times acceleration is what we have to find. Now at particle A, we applied the same formula, forward force minus backward force is equals to MA. But at A, since the object will be going upwards, so now it's going to be T
which is the forward force, minus 1.5, which is the backward force, is equals to mass times acceleration. That is equation number 2. Acha, please tell me that why did I assume that B is going to go down and A is going to go up? मैंने अदर वे अराउंड क्यों नहीं किया? क्वेश्चन में तो नहीं कहा कि बी नीचे जाएगा और ए ऊपर आएगा, तो मैंने क्यों ऐसा किया? Because B has more higher mass. Yes, exactly. Because see, B has greater weight pointing downwards. 2.5 न्यूटन की फोर्स है और दूसरे पे 1.5 न्यूटन की फोर्स है, तो बी नीचे मूव करेगा और फिर उसकी वजह से ए ऊपर मूव करेगा. ओके, अब वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिंस दिस इज वन स्ट्रिंग तो टेंशन तो सेम रहेगी, इसीलिए हमने दोनों इक्वेशन में टी को टी ही यूज किया, T1 और T2 नहीं यूज किया. सिमिलरली आई थिंक मैंने जब पीछे लिखवाया था ना नोट्स में कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी of the connected particles is the same at a particular instant, उसके साथ ना acceleration भी लिखो. Acceleration भी same होती है क्योंकि particles connected है. So जो एक की acceleration है वो दूसरे की भी acceleration है, as long as string taut है और slacked नहीं. Slack हो जाए फिर तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि free fall acceleration आ जाती है. Okay, now please solve these two equations simultaneously और मुझे बता दो कि A क्या आता है. T तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, सीधा A पूछा है. So you may eliminate T and find A. 2.5 meters per second square. Okay. Yeah, you can also find T, but there are no marks for that. Okay, so acceleration is 2.5 meters per second after solving this meters per second square. Okay, part 1 is done. After 2 seconds, B hits the floor and comes to rest without rebounding. The strings become slack and A moves freely under gravity. Let me show that. Okay. So what is happening? After 2 seconds, B hits the ground. So it was here initially, and then within T is equals to 2 seconds, it hits the ground. Okay. So when it hits the ground, the particle is, let's say, here, because it got pulled up. Okay. So again, it took the string 2 seconds, or the particle 2 seconds to move from here to here, from its original spot to the new height. Okay. So after 2 seconds, B hits the floor, come to rest without rebounding. The string slacks. So now the string will slack and it will further be pulled up. यहाँ कहीं आ जाएगा particle. मैम जी. ए 40 नहीं बनता? मेरे पास तो 2.5 ही लिखा हुआ है आंसर में, मैंने इसको फाइंड नहीं किया, कर लेते हैं. लेट्स सी. टेंशन को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली ऐड द टू इक्वेशंस. तो 2.5 ये माइनस टी और टी तो कट जाएगा. 2 माइनस 1.5 हो गया 1 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लिया तो 0.30 a, and then you divide 1 and 0.3. What do we get? ये तो 3.33 आ रहा है. एक सेकंड, कुछ गलत किया है मैंने. 2.5 minus that is 1. मैम मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की तो अच्छा, this 40 is आ रहा है. 0.4. sorry, ये 0.4 है, not 0.3, and 1 divided by 0.4 is 2.5. सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिर दाऊद कोई गलती हुई है, मुझे भेज दो अभी और मैं क्लास के बाद आपको गलती पॉइंट आउट कर. ठीक है, बट डू सेंड इट टू मी राइट नाउ. बल्कि अभी मैं देख के बता दूंगी, आप पहले मुझे भेज दो.
but answer 2.5 is correct. Okay. Acha, so it says that after 2 seconds, B hits the floor, comes to rest without rebounding, strings become slack, and A moves freely under gravity. Find the time that elapses until the string becomes taut again. So अब you have to find the time in which the string again comes back from its highest position here to this position. ये time बताना. Okay, so let's see what can we do. Okay. At this point, for the second particle at the right, the V is 0 because it has come to rest. That means, अच्छा नहीं, हमने find करनी है speed right before it hits the ground. So this is particle B. Yeah, that's A here and that's B. Okay. So first thing I need is speed or velocity of B. Right before it hits the ground. Okay. So let's take a look at the motion. This was the original position of B. This is the new position of B. इसके बीच में टाइम 2 seconds गुजरा है और हमें क्या पता है, हमें इसकी एक्सेलरेशन पता है. एक्सेलरेशन है 2.5. पी की एक्सेलरेशन हमने निकाल दी थी पार्ट 1 में. उसके अलावा ये रेस्ट से मूव किया ना, तो इस ऊपर वाले बी की इनिशियल बी की u0. So at this point B has a speed of 0 and in 2 seconds it hits the ground and the acceleration is 2.5. तो अब मुझे V निकाल के बताओ. Speed of B right before it hits the ground. So we can use V is equals to U plus AT. So V is equals to 0 plus 2.5 times 2, वो आ गया 5 meters per second. So this is the speed of B right before it hits the ground. That means यहाँ पे V is 0. ठीक है? That means यहाँ पे the speed is 0. पर उसकी स्पीड को मैं U कहूंगी क्योंकि अभी उसने फर्दर ऊपर जाना है. सॉरी 0 नहीं है, 5 है. 5 आया ना, स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. सो 5 है एंड 5 है. एक को हम V कह रहे हैं क्योंकि वो उसकी फाइनल स्पीड है, लेकिन इधर वाले की फाइनल स्पीड नहीं है, वो तो फर्दर ऊपर जाएगा, तो उसको मैं U कह रही. ओके. अब A पे आ जाते हैं. पार्टिकल A पे. पार्टिकल A का हमें ये पता है कि ये पुली है. जब B ने नीचे हिट किया है तो पहले तो स्ट्रेच दिया है, ये B ने इधर हिट कर दिया है और इसकी V बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 5, तो इसका U बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 5. आई मीन एट द सेम इंस्टेंट इट्स 5. फिर हो गया स्ट्रिंग स्लैक और इसको फर्दर ऊपर खींच लिया. सो ये आ गया V इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, अब सिंस स्ट्रिंग स्लैक हो गया है तो फिर एक्सेलरेशन जो है ना वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होती है. ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन हम -10 यूज करेंगे.
अब आपको टाइम चाहिए, कितने टाइम में ये नीचे वाले ए पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट तक चला गया। टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो वो यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 t, t इज इक्वल्स टू 0.5 seconds. तो 0.5 सेकेंड्स लगे हैं पार्टिकल ए को अपनी इस पोजीशन से मैक्सिमम हाइट की पोजीशन तक आने के लिए। सो यहां से यहां तक टाइम है 0.5। तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि नीचे आने का, वापस इस हाईएस्ट पॉइंट से अपने ओरिजिनल पॉइंट तक आने का, उसका भी टाइम 0.5 है। सो टोटल टाइम फॉर द स्ट्रिंग टू बिकम टॉट अगेन, मतलब दोबारा से स्ट्रेच हो जाए, तो उसके लिए ये इस पार्टिकल का नीचे वापस आना जरूरी है। सो फिर टोटल टाइम विल बी 0.5 इंटू 2, 0.5 सेकेंड में वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक गया, और फिर फर्दर 0.5 सेकेंड में वो नीचे अपने पॉइंट पे आ गया। सो ये आ गया 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है sketch on a single diagram the velocity time graph for both the particles. Okay, so पहले मैं सिंपल पार्टिकल की बात करती हूँ जो खाली नीचे गया, पार्टिकल बी। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल बी नीचे गया, पार्टिकल ए अपवर्ड गया। इसका मतलब है इनकी वेलोसिटीज को है ना हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। सो एक की वेलोसिटी अगर यू बन रही है तो दूसरे की वेलोसिटी हम ग्राफ पे यू बनाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मैटर करती है। सो फॉर बी हमें पता है कि जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। अच्छा, जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो बी रेस्ट पे था, तो दैट मीन्स दैट टाइम 0 वेलोसिटी इज 0, ये मैंने शुरू कर दिया। और जब बी आके फ्लोर पे हिट किया है तो टाइम 2 है, और जो उसकी स्पीड है ना वो 5 है, तो यहाँ नीचे 5 लिख लिया, बल्कि माइनस। ओके, so at time 2 velocity is going to be 5 meters per second, but क्योंकि इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रही हूँ तो -5 हो गया। So the first velocity time graph for B looks like this. This is for B. पहले स्पीड वो 0 एट टाइम 0, और फिर टाइम 2 पे स्पीड 5 हो गई है, बट हमने -5 से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हम डाउनवर्ड जर्नी को अंडर द ग्राफ शो कर रहे हैं। अब फॉर ए, उसकी टोटल जर्नी में काफी सारी वेलोसिटीज हैं एट सर्टेन टाइम्स। तो फॉर ए टाइम 0 पे, वही जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो टाइम भी 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी, तो मैं इसको इधर प्लॉट कर ये। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2 सेकेंड्स तक इसने 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड ले ली। तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मुझे इसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना है, क्योंकि बी पार्टिकल नीचे जा रहा था और उसकी मैंने अंडर द ग्राफ शो की है, तो इसकी मैं ओवर द ग्राफ शो करूंगी क्योंकि वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो यहाँ पे 2 पे द स्पीड इज 5, सो 2 सेकेंड्स में उसकी स्पीड 5 होगी। अच्छा, फिर आधे सेकंड में उसकी स्पीड 0 हो गई। तो इधर इसके बाद ना, यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 3 यहाँ कहीं है, और इसके बीच में 0.5 सेकेंड्स है, तो यहाँ तक ना स्पीड हो गई 0। अब 0 ही तो नहीं रही, उसके बाद फिर वो यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस नीचे अपनी ओरिजिनल इस स्पॉट पे आया है,
और उसने फर्दर 0.5 सेकेंड्स और लिए और फिर उसकी स्पीड दोबारा से 5 हो गई। पहले 5 स्पीड थी जब स्ट्रेच था और यहाँ पे हिट किया था फ्लोर को, क्योंकि ये 5 था तो हमने इसका U5 ले लिया था। फिर इम्पैक्ट की वजह से थ्रेड होता है स्लैक और ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है। तो ये हमने देखा था कि आधे मिनट में 0.5 मिनट्स में वो अपनी स्पीड 0 कर लेता है। और फिर जब वो नीचे आएगा ना इस स्पॉट पे अगेन आफ्टर अनदर 0.5 सेकेंड्स, तो इट विल गेन इट्स ओरिजिनल स्पीड विच वाज 5। तो अब जब ये 0.5 सेकेंड्स में फर्दर ड्रॉप होगा, तो अब क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया, पहले ए ऊपर जा रहा था और फिर टाइम 2.5 सेकेंड्स के बाद अब वो नीचे आएगा, सो डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट और यूं जाएगा ग्राफ -5 तक, यूं करके कुछ। ये एक ही लाइन बननी चाहिए, मेरी ज्यादा ही बन रही है, यूं कुछ है। यहाँ पे 2.5 है ये वाली, और फिर फाइनल 3 पे स्पीड -0.5। ओके, दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द गिवन जर्नी। चलो यहाँ पे मैकेनिक्स एंड करते हैं आज का।